Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic is predation. Predation is a type of population interaction between members of two species in which one species gets benefited and another gets harmed. So we can say that predation in predation one species gets benefited, that is predator gets benefited, and the other one gets harmed. This is called prey. Prey gets harmed, predator gets benefited. It is an interaction. Predation is an interaction between members of two species in which members of one species capture, kill, and eat up members of other species. These members of one species capture, kill, and eat members of other species. In this way, predation is a natural way of transferring energy fixed by plants to higher trophic levels. This is a way by which energy is transferred from one trophic level to another. Those which eat, kill, eat, and capture others are called predators, whereas the one which is killed or eaten is called prey. Predators are mostly animals. Predators are mostly animals. These are carnivorous animals which eat flesh. Also, predators eat other animals. These are carnivores. Sometimes herbivorous animals which either eat parts of plants or seeds of plants. They are also predators. So, predators can be carnivores or herbivores. Carnivores eat other animals, and herbivores eat other plants or plant parts. So, they are also predators. Insectivorous plants. You may have come across the name of Nepenthes. This is an insectivorous plant which eats insects. It has a special mechanism of trapping insects and secretes some enzymes which help in the digestion of these insects. Nepenthes, ड्रोसीरा है, नेपिथेंस है, ये भी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं. सो दिस ऑल जो आपने यहाँ से यहाँ देखा, it is a sort of predation. Animal eats animals, this is predation. Animals eat plants, this is predation. Plants eat animals, or we can say insects, this is also a predation. I will cite you some examples. Tiger predates on prey deer, this is predation. Frog eats insects, this is predation. Owl eats rats, this is predation. Sea snake eats eggs, this is predation. Land snake eats rats, this is predation. Land snake often use the shelter of rats, this is a sort of predation. So these all are examples of predation. Sparrow, for example, predates on seeds, this is a sort of predation. So these all are predators. These all are predators. Now, for plants, these herbivores, these are predators, herbivores which eat plants, animals which eat plants, these are predators.
uh, about 25% of insects are phytophags. Phytophags means they feed on sap and other plant parts, as these cannot run. Insects cannot run. About 25% of insects are phytophags. Phyto means plant, phagus means eating. These eat plants. जैसा कि आपने देखा होगा कि कितने इंसेक्ट्स प्लांट्स पे अपना गज़ा हासिल करते हैं. दे eat plant parts, they use plant sap for their food. These plants have evolved wonderful morphological and biochemical arrays. Now, or defense against these animals. For example, thorns, spines. These are actually morphological. These are morphological defense mechanisms which plants use to get rid from predators. Sometimes plants produce and store chemicals which make these predators sick. Which make predators sick and affect their digestive system, reproductive system, and kill them. So, plants have evolved special morphological. Morphological means, for example, thorns हैं, spines हैं, और biochemical arrays means they produce some special chemicals which make these animals sick, which inhibit their feeding, which inhibit their digestion, reproduction, and kill them. These are the wonderful morphological and biochemical arrays or defense mechanism which is evolved by plants to get rid from these predators. A weed, namely Calotropis, grows rapidly because it produces a poisonous glycoside. ये वीड जो है कैलोट्रोपस, ये तेज़ी से ग्रो करती है. ये एक पॉइजनस ग्लाइकोसाइड प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसको एनिमल्स नहीं खाते हैं. इसमें एक प्रॉब्लम ये है, ये ग्लाइकोसाइड प्रोड्यूस करता है जो एनिमल्स के लिए बहुत पॉइजनस है. बहुत से केमिकल्स तैयार होते हैं एज डिफेंस अगेंस्ट ग्रेजर्स. जो ये हर्बिवोरस एनिमल्स होते हैं, इनके डिफेंस में बहुत से केमिकल्स ये तैयार करते हैं ये प्लांट्स, ताकि वो इनसे बच पाए. निकोटीन है, कैफीन है, क्यूनिन है, ओपियम है, ये these all serve as defense against these grazers or browsers. Sometimes insects camouflage to avoid to be detected by predators. इंसेक्ट्स में कीमोफिलेज होता है, वो जल्दी ही अपना रंग बदलते हैं ताकि वो नज़र नहीं आए अपने प्रीडेटर्स को. These are adaptations. For example, these insects are eaten by frogs, frog is eaten by snake, snake is eaten by eagle. These insects have evolved special mechanism or camouflage. They blend themselves, they blend their body color with the surroundings to hide themselves from the predators. This predator prey relationship is important in biology for biological control of weeds. For example, prickly pear cactus opuntia turned out to be serious weed in Australia. ऑस्ट्रेलिया में ये एक बहुत ही अहम ख़तरनाक मसला बन गया जब ये ओपनशिया वहाँ इन्वेसिव प्लांट बन गया, वीड बन गया, जिसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा था. 1920 में ये स्प्रेड मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स पे स्प्रेड हो गया. फिर एक कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर लाया गया, नेचुरल हर्बीवोर लाया गया, ए मोथ कैक्टोब्लास्टस was introduced to check its invasive growth. फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए
ایک کیکٹوبلاسٹس ایک انسیکٹ لایا گیا، نیچرل ہربیوور لایا گیا جس نے اس کا گروتھ چیک کیا، اس کے گروتھ کو کنٹرول کیا، اس کے پلانٹ انویژن کو کنٹرول کیا. یہ پریڈیٹر پرے ریلیشن شپ بایولوجیکل کنٹرول آف ویڈس میں استعمال کیا گیا. جو پریڈیٹرز ہیں یہ دیز ہیلپ ان مینٹیننگ اسپیشیز ڈائیورسٹی، اس سے اسپیشیز ڈائیورسٹی مینٹین رہتی ہے بائی ریڈیوسنگ دا انٹینسٹی آف کمپٹیشن امانگ کمپیٹنگ پرے اسپیشیز. جب یہ کمپٹیشن زیادہ رہتا ہے تو جو پریڈیٹرز ہوتے ہیں یہ پری اسپیشیز میں کمپٹیشن کو کم کرتے ہیں، اس سے مینٹین رہتی ہے اسپیشیز ڈائیورسٹی. اسٹار فش، پیزاسٹر، more than 10 species become extinct within 1 year. 10 سے زیادہ اسپیشیز جو ہیں وہ ایکسٹنکٹ ہو گئی ڈیزاسٹر کی. یہ ایک اہم ایگزامپل ہے. اور راکی انٹرٹائڈل کمیونٹیز آف دا امریکن پیسیفک کوسٹ. دا اسٹار فش ڈیزاسٹر از این امپورٹنٹ پریڈیٹر. وین آل دا اسٹار فش وائر ریموڈ ایکسپیریمنٹلی، جب ان کو ایکسپیریمنٹلی ریموو کیا گیا ان کو انکلوزڈ انٹرٹائڈل ایریا سے، تو مور دین 10 اسپیشیز جو انویٹیبریٹس کی تھی وہ ایکسٹنکٹ ہو گئی ایک ایئر میں بیکاز آف انٹر اسپیسیفک کمپٹیشن بڑھ گیا تو وہ اسپیشیز ایکسٹنکٹ ہو گئی. اس لیے جو یہ بایولوجیکل کنٹرول ابھی آپ نے پڑھا اس میں وہ مینٹین رکھتے ہیں اسپیشیز ڈائیورسٹی ود ان کمیونٹی. اس سے اسپیشیز ڈائیورسٹی کمیونٹی میں رہتی ہے. ایک تو میں نے بولا تھا پریڈیٹر پرے ریلیشن شپ میں کیا ہوتا ہے، اس میں ٹرانسفر آف انرجی اکراس ٹراپک لیولز ہوتا ہے، انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے. فار ایگزامپل پلانٹ تھا، اس کو پریڈیٹ کیا اینیمل نے تو پلانٹ سے انرجی ہو گئی ٹرانسفر دوسری ٹراپک لیول میں اپ ٹو اینیمل. اس نمبر 2 یہ پریڈیٹر پرے ریلیشن شپ جو ہے کیپس پرے پاپولیشن انڈر کنٹرول، اس سے پرے پاپولیشن انڈر کنٹرول میں رہتی ہے. جو میں نے آپ کو ایگزامپل بولا پرکلی پیئر کیکٹس جو ہے، جو آسٹریلیا میں 1920 میں انٹروڈیوس کیا گیا، اس نے وہاں بہت پرابلم مچائی تھی. ملینز آف ہیکٹرس پہ یہ اسپریڈ ہو گیا. پھر اس کو انڈر کنٹرول لایا گیا جب وہاں کیکٹس فیڈنگ پریڈیٹر لایا گیا. کیکٹس فیڈنگ پریڈیٹر اس کے نیچرل ہیبٹیٹ سے اس ملک میں، تو اس نے اس کو کنٹرول میں لایا گیا. اس لیے یہ بایولوجیکل کنٹرول آف ویڈس میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ جو بایولوجیکل کنٹرول آف پیسٹس ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے، اس میں یہ ایبلٹی ہوتی ہے، ایبلٹی آف پریڈیٹر ٹو ریگولیٹ پرے پاپولیشن. اس نے پرے پاپولیشن کو ریگولیٹ کیا. نمبر 2 میں نے بولا اسپیشیز ڈائیورسٹی. دیز پریڈیٹرز ہیلپ ان مینٹیننگ اسپیشیز ڈائیورسٹی in a community by reducing the intensity of competition among competing prey species. These predators help in maintaining species diversity. Species diversity یہ مینٹین رکھتے ہیں ایک کمیونٹی میں جب یہ کم کرتے ہیں انٹینسٹی آف کمپٹیشن among competing prey species. جو کمپیٹنگ پرے اسپیشیز ہیں ان میں کمپٹیشن کم رہتا ہے. فار ایگزامپل راکی انٹرٹائڈل کمیونٹیز جو ہیں امریکن پیسیفک کوسٹ میں وہاں اسٹار فش ڈیزاسٹر جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ پریڈیٹر ہے. پیسیفک کوسٹ میں اسٹار فش ایک امپورٹنٹ پریڈیٹر ہے. جب تمام اسٹار فش ڈیزاسٹرز جو ہیں ریموو کیے گئے ایکسپیریمنٹلی اس انکلوزڈ
इंटरटाइडल एरिया से, तो 10 स्पीशीज इनवर्टिब्रेट्स की एक साल में एक्सटिंक्ट हो गई ड्यू टू दिस इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन से वो 10 स्पीशीज जो थी वो एक्सटिंक्ट हो गई विद इन 1 ईयर। ये यही था क्योंकि डिजास्टर को जब रिमूव किया गया तो इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन बढ़ गया। इसलिए जो ये प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द स्पीशीज डाइवर्सिटी। अब इस प्रीडेशन के रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। प्रूडेंट प्रीडेटर, इट इज, जो ये प्रूडेंट होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ प्रूडेंट प्रीडेटर इज बिकॉज इट इज टू एफिशिएंट प्रीडेटर। ये एफिशिएंट होता है प्रीडेटर, ओवर एक्सप्लॉइट्स इट्स प्रे, इट ओवर एक्सप्लॉइट्स, ये इसका इस्तेसाल करता है। द प्रे माइट बिकम एक्सटिंक्ट, प्रे एक्सटिंक्ट भी बन सकता है एंड इट विल रिजल्ट इन एक्सटिंक्शन, तो ये एक्सटिंक्ट हो सकता है ड्यू टू लेक ऑफ फूड, ड्यू टू लेक ऑफ फूड। अगर प्रीडेटर के लिए फूड नहीं होगा तो प्रीडेटर एक्सटिंक्ट होगा। इसलिए जो प्रीडेटर होगा वो भी एफिशिएंट होना चाहिए। जब वो ओवर एक्सप्लॉइट करता है प्रे का, तो द प्रे माइट बिकम एक्सटिंक्ट। जब प्रे एक्सटिंक्ट होगा तो प्रीडेटर ऑटोमेटिकली एक्सटिंक्ट होगा ड्यू टू लेक ऑफ फूड। एवोल्यूशन ऑफ वेरियस डिफेंस एडाप्टेशंस, अभी आपने मुख्तलिफ एडाप्टेशंस पढ़ी, वो कैसे इवॉल्व होती हैं। प्री स्पीशीज have evolved defense to minimize the or challenge the impacts of predation. For example, कीमोफ्लेग अडॉप्ट करते हैं, वो अपना रंग बदलते हैं। क्रिप्टिक अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, वो अपना कलर सराउंडिंग्स के साथ मैच करते हैं अपने आप को बचाने के लिए प्रीडेशन से। इंसेक्ट्स में है एंड फ्रॉग्स में है वो, ताकि वो इजीली उनको अपना प्रीडेटर डिटेक्ट नहीं कर सके। केमिकल डिफेंसेस, कुछ प्रे दे प्रोड्यूस पॉइजनस केमिकल्स ताकि उनको प्रीडेटर्स नहीं मार सकें। फॉर एग्जांपल मोनोरक बटरफ्लाई, वो दैट इज़ अवॉइडेड बाय इट्स प्रीडेटर, उसका प्रीडेटर बर्ड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पेशल केमिकल्स इन इट्स बॉडी, उसके बॉडी में कुछ स्पेशल केमिकल्स होते हैं विच मेक्स हाईली डिसटेस्टफुल, जिससे इसका टेस्ट ठीक नहीं रहता है इस बर्ड के लिए। वो केमिकल हासिल करता है ये मोनोरक बटरफ्लाई एक पॉइजनस वीड से, जब वो उस पॉइजनस वीड पे फीड करती है कैटरपिलर स्टेज में। ऐसे ही कुछ मिमिक्रीज होती हैं, रिजेम्बलेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अनदर और टू द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, ये रिजेंबल करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ या कुछ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के साथ जहाँ ये रहते हैं, जिससे ये प्रोटेक्ट होता है, जिससे इसको फ़ायदा मिलता है। मिमिटिक, और जिसका ये कॉपी करता है उसको कहते हैं मॉडल। वार्निंग कलरेशन में कंसीलिंग फ्रॉम as well as coloration enables the animal species to avoid its natural predator से ये बच जाता है। ऐसे ही मैंने आपको बोला कुछ मॉर्फोलॉजिकल मीन डिफेंसेस होती हैं, फिजियोलॉजिकल होती हैं, बायोकेमिकल होती हैं, जिससे ये मार जाते हैं। प्लांट्स, ये ज़्यादा प्लांट्स में है। इंशाल्लाह tomorrow we will take next topic